हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। हाय, दिस इज श्वेता मालती। वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल विद्यार्थी प्रो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, अ प्रीमियर डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म for CUET, BCom, BBA, NetJRF, UPHESC, UPPSC, UPSC, and many other examination aspirants. Do you know what is the backbone to boost up our preparation for any examination? Okay, so let's try to find out the answer of this question, and I'll answer about this question at the end of this session. Okay, so let's start today's session with the most interesting questions, memory recalled questions of the day for our new series of business studies. And our today's unit is Unit 2, Principles of Management. Okay, and in this series and in this context, our first question is, which of the following statements is or are true with the reference to principles of management? नीचे कुछ statements दिए गए हैं और आपको find out करना है कि ये इनमें से कौन सा statement या कई सारे statements सही हैं with reference to principles of management. And options are: option number 1, the principles are guidelines to actions; option number 2, the principles denote a cause and effect relationship; option number 3, principle helps the manager to take decisions while performing various management functions; and option number 4, all of the above. And the correct answer for this question is option number D, all of the above. जितने भी statements दिए गए थे ये सारे reference में थे कि ये सारे सही थे with reference to principles of management. Okay, so in this scenario, in this slide we have the basic understanding what is the principles of management. Principles of management एक ऐसे set of guidelines हैं और concepts हैं जो कि serve करते हैं foundation for managing organizations effectively. Our next question is very simple, and the question is, who is known as the father of scientific management? And the options are: option number 1, Taylor; option number 2, Drucker; option number 3, Kuntz; and option number 4, Fayol. And the correct answer for this question is option number 1, F.W. Taylor. Frederick Winslow Taylor is known as the father of scientific management. ये एक अमेरिकन इंजीनियर थे और मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी थे जिन्हें ये क्रेडिट जाता है विद डेवलपिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. Our next question is, how many principles did Henry Fayol enlist? Henry Fayol जी ने कितने principles दिए थे? And the options are: option number 1, 4; option number 2, 8; option number 3, 12; and option number 4, 14. And the correct answer for this question is option number D, 14. हेनरी फ्यूल एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे और मैनेजमेंट थ्योरिस्ट भी थे. इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया था इन हिज बुक जिसका नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट. ये 1916 में ये इन्होंने बुक दी थी और इसमें ये 14 प्रिंसिपल्स भी इनलिस्ट किए थे इन्होंने. Our next question is, Henry Fayol was a option number 1, mining engineer; option number 2, production engineer; and option number 3, accountant; and option number 4, social scientist. ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी हो गया बिकॉज इसका आंसर पिछली स्लाइड्स में ही आ गया. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, माइनिंग इंजीनियर. हेनरी फ्योल एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे और जो कि मैनेजमेंट थ्योरिस्ट भी थे जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट की. जनरल बुक एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट करके एक उन्होंने बुक दी थी 1916 में. So the correct answer is option number 1, mining engineer. Henry Fayol was a mining engineer. Our next question is, administrative principles were given by which of the following theorists? And the options are: option number 1, F.W. Taylor; option number 2, Henry Fayol; and option number 3, Abraham Maslow; option number 4, W.W. Taylor. क्वेश्चन इज, इनमें से कौन से ऐसे थ्योरिस्ट थे जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया था? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हेनरी फ्योल. एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स वर गिवन बाय हेनरी फ्योल. फ्योल्स एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स आर ऑफन रिफर्ड टू एज 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. Our next question is, identify the principle of management given by Fayol according to which the intent of this principle is to produce more and better work with the same effort. And the options are: option number 1, division of work; option number 2, unity of direction; option number 3, scalar chain; and option number 4, equity.
क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है उसे आइडेंटिफाई करना है गिवन बाय फ्योल, जिसके अकॉर्डिंग द इंटेंट ऑफ दिस प्रिंसिपल इज़ टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क विद द सेम एफर्ट। कि मतलब एक ऐसा प्रिंसिपल इसका जिसका ये पर्सपेक्टिव हो कि उसी प्रयास से अधिक और बेहतर कार्य का उत्पादन करना है। एंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, डिविजन ऑफ वर्क। The principle suggests that work should be divided into small and specific tasks, and each worker should specialize in performing a particular task. This helps to increase productivity and efficiency. जो division of work है वो एक ऐसा principle of management है जो कि दिया गया है by Henry Fayol, जिसके अकॉर्डिंग द इंटेंट ऑफ दिस प्रिंसिपल इज टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क विद द सेम एफर्ट। सेम एफर्ट से मोर और बेटर वर्क हो सके। And our next question is, the concept of mental revolution as prescribed by Taylor involves a change in the mindset of workers, in the mindset of which people? And the options are option number 1, worker towards the management; option number 2, management towards the worker; option number 3, worker and management towards one another form of competition to cooperation; and option number 4, customers towards the management of the organization. And the correct answer for this question is option number C, worker and management towards one another from competition to cooperation. जो कॉन्सेप्ट है ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन एज प्रेस्क्राइब्ड बाय टेलर, ये इन्वॉल्व करता है चेंज इन माइंडसेट ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स वन अनदर, दोनों के बीच में कंपटीशन टू कॉपरेशन का माइंडसेट चेंज करता है। बिकॉज mental revolution and emotional intelligence plays very vital role for smooth functioning of the organization and employees relationship. Our next question is, this principle will give rise to a spirit of mutual trust and belongingness among team members. Which principle of management stated by Fayol is highlighted by this statement? एक statement है, rise to a spirit ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस अमंग टीम मेंबर्स। ये कौन से प्रिंसिपल को हाईलाइट करता है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर 1, इनिशिएटिव; ऑप्शन नंबर 2, स्पिरिट de corps; ऑप्शन नंबर 3, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज; एंड ऑप्शन नंबर 4, इक्विटी। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, स्पिरिट de corps. Because the principle suggests that there should be a sense of unity and harmony among employees. This helps to promote teamwork and positive work environment. Our next question is, the Fayol's principle of emphasis on kindness and justice in the behavior of managers towards worker is what? Option number 1, initiative; option number 2, spirit de corps; option number 3, discipline; and option number 4, equity. And the correct answer for this question is option number 4, equity. This principle suggests that employees should be treated fairly and equally. This helps to ensure that everyone feels valued and respected. Our next question is, according to which principle organization should have a chain of authority and communication that runs from top to bottom and should be followed by managers and the subordinates? Which principle of management ये किसके अकॉर्डिंग है कि ऑर्गेनाइजेशन को एक चेन ऑफ अथॉरिटी और कम्युनिकेशन के लिए फॉलो करना चाहिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और and each and every candidate or each and every member of the organization should follow, उन्हें फॉलो करना चाहिए एक manners for the subordinates. And the options are option number 1, authority and responsibility; option number 2, scalar chain; option number 3, discipline; and option number 4, centralization and decentralization. And the correct answer is option number 2, scalar chain. Scalar chain एक ऐसा chain of all supervisors है from top management to the person working in the lowest rank. Our next question is, which of the following statements best defines the techniques of management? इनमें से कौन सा statement है जो techniques of management को सबसे अच्छे तरीके से define करता है? And the options are option number 1, it is a mindset of guidelines to take decisions and actions; option number 2, it is a procedure which involves a series of steps to be taken; option number 3, they are general rules for behavior of individuals; and option number 4, none of the above. And the correct answer is option number B, ये एक ऐसा procedure है, it is a procedure which involves a series of steps to be taken.
बिकॉज टेक्निक्स आर द प्रोसीजर्स और मेथड्स जो इन्वॉल्व करते हैं सीरीज ऑफ स्टेप्स टू बी टेकन टू अकम्प्लिश गोल्स इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर. Our next question is, which of the following techniques proposed by Taylor aims at eliminating unnecessary diversity of products? Options are option number 1 motion study, option number 2 standardization and simplification of work, option number 3 differential piece wages system, option number 4 functional foremanship. इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो टेक्निक को प्रपोज करता है and aims at eliminating unnecessary diversity of products? And the correct answer for this question is option number B, standardization and simplification of work. Simplification aims at eliminating unnecessary diversity of products. It results in savings of cost of labor, machine and tools. Our next question is, which of the following is not a principle of management given by a Taylor? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल नहीं है गिवन बाय टेलर्स? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर 1 साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, and the options are option number 1 science not rule of the thumb, option number 2 functional foremanship, option number 3 harmony not discord, and option number 4 maximum not restricted output. And the correct answer for this question is option number D, maximum not restricted output. Because जो एक principle होता है of maximum not restricted output, also known as the principle of no restriction, was given by Elton Mayo, a pioneer in the field of human relations and management. एंड बाकी जो तीन प्रिंसिपल्स दिए गए हैं ये दीज ऑल आर गिवन बाय F.W. टेलर, एंड ऑप्शन डी मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड इज द ओनली प्रिंसिपल गिवन बाय द एल्टन मायो. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. Our next question is, the principle of management given by Fayol which aims at preventing overlapping of activities is what? Option number 1 division of work, option number 2 unity of command, option number 3 unity of direction, and option number 4 order. And the correct answer for this question is option number 2 unity of command. यूनिटी ऑफ कमांड एक ऐसा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो गिवन बाय हेनरी फ्योल, जो टारगेट करता है प्रिवेंटिंग ऑफ ओवरलैपिंग एक्टिविटीज़. ये नहीं कि अगर एक कोई एक्टिविटी या कोई परफॉर्मेंस है वो हो चुकी है तो वो अगेन रिपीट नहीं हो सकते. द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड states that each employee should receive orders and be accountable to only one manager. This means that there should be no overlapping of authority or responsibility between different managers or different departments. Because ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मैनेजर है, मतलब कई सारे वर्कर्स हैं, वो कोई उनका मैनेजर कुछ और कह रहा है, उनका मैनेजर कुछ और कह रहा है. तो यूनिटी ऑफ कमांड, अगर किसी एक वर्क फोर्स को या किसी लेबर को कमांड मिल रही है तो उसको हर जगह से सेम कमांड मिलनी चाहिए. Therefore, the principle of unity of command states that each employee should receive orders and accountable to only one manager. Our next question is, which principle of general management advocates that employee turnover should be minimized to maintain organizational efficiency? And the options are option number 1 stability of personnel, option number 2 remuneration of employees, option number 3 spirit de corps, and option number 4 equity. And the correct answer for this question is option number 1 stability of personnel. क्वेश्चन सेज कि इनमें से ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है ऑफ जनरल मैनेजमेंट जो ये कहता है कि एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो को मिनिमाइज करना चाहिए टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी. एंड द करेक्ट आंसर इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल. बिकॉज जो लेबर टर्नओवर में या एम्प्लॉय टर्नओवर में जो नया इन्वेस्टमेंट लगता है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है. बिकॉज एज वी कैन सी इन दिस स्लाइड, अकॉर्डिंग टू फ्योल, due care should be taken while carrying out the recruitment and selection process, and the new recruits should be placed at a particular position for a sufficient tenure. Therefore, option number 1 A, stability of personnel, is the correct answer for this question. Our next question is, what is the application of this principle of management leads to higher production and better work for the same effort? Identify the related principle of general management.
इनमें से कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है उसे आइडेंटिफाई करना है जिसका एप्लीकेशन होता है leads to higher production and better work for the same effort. And the correct and the options are: option number 1 discipline, option number 2 equity, option number 3 division of work, and option number 4 order. And the correct answer for this question is option number C, option number 3 division of work. क्योंकि जो एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क है वो इनेबल करता है एम्प्लॉय टू गेन प्रोफिशिएंसी इन वर्क बाय डूइंग इट repetitively over a period of time. Our next question is the technique of differential piece rate system was developed by Taylor in order to which of the following options? Options are: option number 1 discriminate efficient and inefficient workers, option number 2 reward the efficient worker, option number 3 motivate the inefficient workers to perform better, option number 4 all of the above. And the correct answer for this question is option number D, all of the above. ये सारे ही टेक्निक्स हैं फॉर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम जो डेवलप किया गया था बाय FW Taylor. Taylor advocate that efficient workers should be paid at a higher rate as compared to inefficient workers. Our next question is which of the following is an objective of time study? इनमें से कौन सा है जो ऑप्शन जो ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी को रिलेट करता है? एंड द ऑप्शंस आर: ऑप्शन नंबर 1 टू कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट, ऑप्शन नंबर 2 टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, ऑप्शन नंबर 3 टू फॉर्मुलेट सूटेबल इंसेंटिव स्कीम्स, एंड ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. The objective of time study is to help organizations optimize their processes and increase efficiency by identifying and eliminating wasteful practices and inefficiencies. टाइम स्टडी एक ऐसा टेक्निक है जो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशंस को जो जिससे वो अपनी प्रोसेस और अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं बाय आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग वेस्टफुल प्रैक्टिसेस एंड इनएफिशिएंसीज. फॉर एग्जांपल अगर एक कोई फैक्ट्री है वहाँ पे फॉर एग्जांपल एक बिस्किट फैक्ट्री और उसमें गार्निशिंग के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स उसमें पड़ रहे हैं और अगर वो बार बार एक मशीन या एक लेबर बार बार थोड़े गार्निशिंग प्रोडक्ट्स लाके उस पर अप्लाई कर रहे हैं तो वो इनएफिशिएंट है, वो वेस्टफुल प्रैक्टिसेस में आएगा. सो अगर हम एक साथ पूरा ड्राई फ्रूट एक साथ रख के फिर उस पर थोड़ा गार्निश करके अगर उस बिस्किट या उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चराइजेशन करते हैं तो वो अवॉइड करेगा वो वेस्टफुल प्रैक्टिसेस को. दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी. And in this way the objective of time study is very helpful for the large scale of manufacturization or production processes. Our next question is which technique of Taylor separates planning and executive functions? And the options are: option number 1 fatigue study, option number 2 functional foremanship, option number 3 section officers, and option number 4 simplifications. And the correct answer for this question is option number 2 functional foremanship. इस क्वेश्चन में ये बताना था कि इनमें से कौन सी टेक्निक है जो सेपरेट करती है प्लानिंग और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट को. जो द फंक्शनल फोरमैनशिप एक ऐसा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो कि डेवलप किया गया है बाय फ्रेडरिक विंस्लो टेलर जिन्हें हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द वर्क ऑफ एम्प्लॉयज शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 functions, planning and execution. Our next question is the concept of work study techniques includes what? Option number 1 time study, option number 2 motion study, option number 3 fatigue study, and option number 4 all of the above. And the correct answer for this question is option number D, all of the above. The concept of work study techniques includes a range of methods and tools that are used to improve the efficiency and productivity of work processes. जो वर्क स्टडी का कॉन्सेप्ट है वो सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करता है. टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटिग स्टडी, ये रेंज ऑफ मेथड्स और टूल्स को भी इम्प्रूव करने के लिए हेल्पफुल होता है. फॉर द जो बेसिक गोल होता है वो इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्क प्रोसेस. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रिंसिपल ऑफ फ्योल
indicates that workers should be encouraged to develop and carry out plans for improvements. And the options are option number 1, division of labor, option number 2, centralization, option number 3, initiative, and option number 4, unity of direction. And the correct answer for this question is option number C, initiative. क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि विच प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल, फ्यूल के किस प्रिंसिपल से ये इंडिकेट करता है दैट वर्कर्स शुड बी इनकरेज्ड टू डेवलप एंड कैरी आउट प्लान्स फॉर इम्प्रूवमेंट्स. This principle suggests that employees should be encouraged to take initiatives and come up with new ideas. This helps to promote innovations and creativity. Our next question is, which of the following statement best describes the principle of division of work? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है ऑफ द प्रिंसिपल, जो कि एक 14 प्रिंसिपल्स में एक प्रिंसिपल है, डिविजन ऑफ वर्क. एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर 1, इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, ऑप्शन नंबर 2, work should be divided into small tasks, and option number 3, labor should be divided, and option number 4, both A and B. And the correct answer is option number D, both A and B. Dividing the work into smaller parts leads to specialization. So division of work से specialization भी होता है, और जो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे जो टास्क होते हैं वो छोटे छोटे स्मॉल टास्क में डिवीजन भी हो जाता है उनका. सो ऑप्शन नंबर A and B both are the best for the principle of division of work. लेबर को नहीं डिवाइड करते, वो काम को डिवाइड करते हैं और उसी अकॉर्डिंग लेबर्स को वो काम असाइन किया जाता है. सो डिवाइडिंग द वर्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स लीड्स टू स्पेशलाइजेशन. एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which technique assesses the performance of workers to provide them necessary rest? And the options are option number 1, motion study, option number 2, time study, option number 3, method study, and option number 4, fatigue study. इनमें से कौन सी टेक्निक है जो कि परफॉर्मेंस जो एसेस करती है द परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर्स टू प्रोवाइड द नेसेसरी रेस्ट? And the options are and the correct option is option number D, fatigue study. Fatigue monitoring involves the use of various tools and techniques to assess the level of fatigue experienced by workers and to identify when they need rest, breaks, or other interventions to prevent fatigue related accidents or errors. Therefore option number D, fatigue study, is the correct answer. Our next question is, which of the following is the primary function of management? Options are option number 1, planning, option number 2, controlling, option number 3, organizing, and option number 4, directing. इनमें से कौन सा primary function of management है? And the correct answer for this question is option number 1, planning. Planning is considered to be one of the primary functions of management. It involves setting objectives, developing strategies, and outlining the steps that need to be taken to achieve those objectives. So सबसे basic और primary function of management हम planning को कहते हैं. And our next question is, the objective of this technique of scientific management is to reduce a given line or a product to fixed type, sizes, and characteristics. Name the technique. And the options are option number 1, differential piece weight system, option number 2, method study, option number 3, standardization and simplification of work, option number 4, functional foremanship. And the correct answer is option number C, standardization and simplification of work. ये एक ऐसा ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेक्निक है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इज टू रिड्यूस अ गिवन लाइन और अ प्रोडक्ट टू फिक्स्ड टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. Standardization of work during production involves consistent form. Standardization का मतलब होता है कि consistent form, size, composition, methods क्या क्या हैं, and quality maintain. Quality को maintain रखना होता है for all products और services, while simplification of work means simplification of work का मतलब होता है कि जो process होता है involve are consistent in terms of efforts, cost and time. Our next question is, the principle of responsibility and authority insists on which of the following options? And the options are option number 1, responsibility is greater than authority, option number 2, responsibility is lesser than authority, and option number 3, responsibility is equal to authority, and option number D, all of the above. And the correct answer for this question is ऑप्शन नंबर सी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू अथॉरिटी. जो प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो
इस फॉर्मूला, इस इक्वेशन पे बेस होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों ही बराबर होनी चाहिए. द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी मीन्स दैट एन एम्प्लॉय हु is given a responsibility should be given the necessary authority to carry out that responsibility effectively. For example, मैं आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दूँ और उसके साथ मैं कोई अथॉरिटी अगर मैं नहीं दे रही हूँ, सो इट्स नॉट बी हेल्पफुल, इट्स नॉट ईजी टू यू कि आप उस पर्टिकुलर टास्क या उस पर्टिकुलर वर्क को अच्छे से परफॉर्म कर पाओ. सो अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो उसके साथ कोई अथॉरिटी भी मिलनी चाहिए. दिस इज़ द इक्वेशन. और ये एक ऐसा प्रिंसिपल है दैट एम्फसाइजेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैचिंग अथॉरिटी विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑर्डर टू अचीव इफेक्टिव रिजल्ट. उससे हमें रिजल्ट्स तो मिल सकते हैं बट इससे हमें इफेक्टिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं. एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिटी ऑफ कमांड इंसिस्ट ऑन. And our next question is unity of command insist on which of the following options? And the options are option number 1, one boss, one employee. Option number 2, orders from a single superior. Option number 3, match between orders of different bosses. And option number 4, all of the above. And the correct option is option number 2, orders from a single superior. Unity of command insists करता है orders from a single superior. The principle of unity of command is a fundamental principle of management which states that each employee should receive orders from and be accountable to only one superior. Our next question is technique of mental revolution is based on the principle of what? Options are option number 1, harmony not discord. Option number 2, science not rule of thumb. Option number 3, principle of responsibility and authority. And option number 4, all of the above. And the correct answer for this question is option number 1, harmony not discord. Is a technique of mental revolution जो कि बेस्ड है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे. दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन आइडिया दैट अ हारमोनियस and positive work environment can lead to improved morale, increased productivity and better outcomes of the organizations as a whole. Our next question is the principles of management can be changed according to the prevailing situation and organization. This shows that management principles are option number 1, flexible, option number 2, scientific, option number 3, behavioral and option number 4, universal. And the correct answer for this question is option number 1, flexible. Flexible or flexibility in any type of principles of management can be changed according to the prevailing situation in an organization is very important because it suggests that management principles are adaptable and flexible. This is indeed true. While the principles of management provide a foundation for effective management, they are not rigid or unchanging. As per the situation of the organization or any type of situation in the market, the principles of management are flexible and it can be changed according to the need of the organizations or people. Our next question is the principle which states that there should be good supervisors at all levels for smooth and systematic working of an organization is what? Options are option number 1, equity, option number 2, initiative, option number 3, discipline and option number 4, order. And the correct answer is option number C, discipline. The principle of discipline based on the idea that a well disciplined workforce is essential for achieving organizational goals, maintaining order and stability and ensuring that employees work to the best of their abilities. Therefore, option number C, discipline is the correct answer for this question. And with the last question of this session and for winding up our session, I am here to share a very important information for all of our students. We are offering a test series. For more updates, kindly WhatsApp your details on the number blinking on the screen and join our Telegram channel Vidyarthi Pro Learning platform for daily updates. And our Vidyarthi Pro Learning family welcomes all your valuable feedbacks and queries, suggestions in the comment section below or feel free to contact number and the given WhatsApp number. Stay tuned for the more updates. Till then, keep revising and keep boosting your knowledge bank with our question bank. Thank you.